Hello students, how are you? How is your study going? Nice, very good. Today we will start the second lesson of geography, that is motion of the earth. Means what? हमारी जो अर्थ है वो कंटिन्यूसली एक एक्सिस के अराउंड घूमती रहती है. वो खुद के इर्द गिर्द भी घूमती है और साथ में सन के इर्द गिर्द भी घूमती है. मीन्स व्हाट? इट टेक्स रोटेशन अराउंड इटसेल्फ and around sun also. Today we will going to study about the earth motion in this lesson. So for example, have you seen a top? Yes. Take that top and make it spin. वो जो टॉप है, टॉप मीन्स भंवरा, जो घूमेगा, जैसे आप अपने रस्सी के सहारे से उसको घुमाते हो, जब वो घूमेगा यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस ऑब्जेक्ट इज़ रोटेटिंग अराउंड वन इमेजिनरी लाइन. जो उसकी सेंट्रल लाइन जो होती है उसके इर्द गिर्द ये घूमता रहता है और उसी समय उसके आजू बाजू में साइड में कुछ इमेजिनरी लाइंस हमें दिखाई देती है. वी विल ऑब्जर्व दैट इमेजिनरी लाइंस ऑब्टेन अराउंड दैट ऑब्जेक्ट. सो द टॉप टर्न्स अराउंड इटसेल्फ. एनी ऑब्जेक्ट दैट टर्न्स अराउंड इटसेल्फ एक्चुअली turns around a certain imaginary line. That line is shown in this figure. You can see here. This is an imaginary line and this top is taking rotation around that imaginary line. The turning of an object around itself is called rotation. Means what? ये जो object है, ये जो top है, वो इस imaginary line के around घूमता है. Means ये खुद के around घूमता है. That type of turning is called rotation, and the imaginary line around which it rotates is called axis of its rotation. Means what? जब ये rotate होता है, घूमता है, तो उसके आजू बाजू में एक लाइन डेवलप होती है. इमेजिन करते हैं हम कि एक लाइन दिखाई दे रही है. That line is known as axis of its rotation. Now we will start with the actual rotation of the earth. So you will see that the plumb line and the earth's axis are at angle to each other. That is, the earth axis is inclined. Means what? In this figure you can see this is the plumb line, and this is the earth axis. Means this line, plumb line and earth axis, it makes some angle, so you can say that the earth axis is inclined. It is not straight, it is inclined. Okay, the earth rotates with its axis inclined like this. The line NS means the axis of the earth. The line NS in the picture shows the earth axis. It passes through the center of the earth. The points N and S are called the poles of the earth. N is the north pole of the earth and S is the south pole. So this is shown as N, means this is the north pole of the earth and this is the south pole of the earth. If a circle were drawn around the surface of the earth exactly in between the north and south poles, it will divide the earth into two equal parts. This imaginary circle is called the equator. Means the central line which passes through the center of the earth. That line is known as equator, and that equator is divide the earth into two equal parts. The two equal parts is make of the earth are called northern hemisphere and southern hemisphere respectively. Means the hemisphere which is present towards the north side, the half circle of the earth which presents towards the north side, that half circle or that hemisphere is known as northern hemisphere. And similarly, the half circle which present towards the south side, that hemisphere is known as southern hemisphere. Let's move further. Next point is sunset and sunrise.
sunset and sunrise. What is sunset and what is sunrise? That we are observing in our day-to-day life. Early morning when we are get up, we will see that the sun is coming up in the sky. And during evening time, we can observe that the sun is going towards the opposite direction. So, when sun is coming up, that time will be called it is a sunrise. And when sun is going, that time we will call it is a sunset. For this, you can take this example. Stick a red bindi on the globe. Set up the previous model of the globe and the candle. Turn the globe anti-clockwise. Note when it is sunrise, noon and sunset at the location of the bindi. For this you can do this activity. You can take the candle in the center of the board or any object or table, and you can put a globe in front of that candle. You have to stick one bindi on the globe as a place. And when you are rotating that globe, you can observe that at what time there is a sunrise, sunset or noon time, where at the place where you stick that bindi. Similarly, after one sunrise, note when the next one occurs at the bindi. You will see that this happens when the earth completes one rotation. That is when it makes one complete turn around itself. That means what? Our earth, it takes full 24 hours to complete one rotation around itself. So, when earth is taking complete rotation, that time sunrise and sunset occurs. Means now if it is sunrise time, so after one complete rotation, again there is a sunrise there. So this period of time that the earth takes to complete one rotation is called a day, or we can say that is a one day. A day has two parts, daytime and night time, or simply day and night. For the purpose of measuring time, we divide the whole day into 24 parts, each of which is called an hour. So, it is for our convenience that we divide the rotation of the earth is called as a day, and we divide that day into two parts, that is day and night, and it goes continuously. After day, night comes, after night again day comes. So for our convenience, we divide that day into 24 hours, and we call that we divide that day into 24 parts, and we call that parts as a hour. Each part is considered as a 1 hour. Next point is a year. Now move the globe along the circle on the table. As you do this, keep rotating the globe and ensure that the axis does not change its orientation. Eventually, the globe will come back to its original place on the circle. This is how the earth revolves around the sun, even as it rotates around itself. The period of time the earth takes to complete one rotation around the sun is called 1 year. There are about 365 days and 6 hours in a year. Means what? Earth जो खुद के इर्द गिर्द रोटेट होती है, रोटेशन लगाती है around its own axis. For that it requires 24 hours. And Earth जो sun के around रोटेशन लगाती है, when it rotates around the sun, at that time earth takes 365 days. So that is called a year. 1 year. For one rotation around the sun, earth requires 1 year, the time of
1 year. That is, there are about 365 days and 6 hours in a 1 year. That much time Earth requires to complete one rotation around the sun. Next point is a leap year. What is leap year? In the Gregorian calendar, the year is taken to have 365 days. It means that it counts 6 hours less every year. That makes 24 hours on one day in every 4 years. To make up for this lost one day, the month of February in the Gregorian calendar has an extra day every 4th year. That year is called a leap year, and it has 366 instead of 365 days, and the February has 29 instead of 28 days. Means what is leap year? हर 4 साल बाद फेब्रुआरी महीने में जो हर साल 28 डेज होते हैं, तो वो हर 4 साल बाद 29 डेज आते हैं. जब फेब्रुआरी महीने में 29 डेज आते हैं, that year is considered as a leap year. Okay. Now next point is phases of moon. Students, you can read that point, do you know, by yourself. If any query you can ask me. Phases of the moon. The full moon and the new moon. So can you tell me the answer of this question? What is the name given to the changing steps of the moon that we see? What are the names of the days on which we see the round moon and on which we see no moon at all? You can find out this answer of this question and tell me. The full moon and the new moon. Now what is full moon and what is new moon? तो हम जब रेगुलरली कैलेंडर में देखते हैं तो हर 15 दिन बाद अमावस्या की रात आती है, पूर्णिमा की रात आती है. तो इन दिनों में जब हम आसमान में देखेंगे तो जब पूर्णिमा की रात होती है, दैट टाइम वी कैन सी द फुल मून इन द स्काई. एंड जब अमावस्या की रात होती है तो उस टाइम पे हमें आसमान में बिल्कुल भी मून नहीं दिखेगा. सो दैट इज़ वी कॉल्ड फुल मून एंड न्यू मून. The moon revolves around the earth and the earth revolves around the sun. मून जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है और अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है. However, these two orbits intersect. Hence, the sun, the moon and the earth are not always along a straight line. एक जब ये रोटेट होते हैं, चक्कर लगाते हैं एक दूसरे के इर्द गिर्द, तब वो कभी ना कभी एक दूसरे के एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं. और दैट टाइम द सन और मून एंड अर्थ आर नॉट ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन. वी सी हाफ ऑफ द मून सरफेस विच फेसेस द अर्थ. दैट इज फ्रॉम द अर्थ वी सी ओनली द वन साइड ऑफ द मून, एंड बिकॉज ऑफ दैट समटाइम्स वी कैन सी ओनली वन साइड ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ. द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन. मून को खुद की लाइट नहीं होती है. वी कैन सी द मून बिकॉज ऑफ द सन्स लाइट. हमें मून क्यों दिखाई देता है? बिकॉज ऑफ द सन लाइट. बिकॉज इट रोटेटिंग अराउंड द अर्थ एंड अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन. साइमल्टेनियसली द मून इज टेकिंग वन रोटेशन around the sun with the earth. So that's why because of the sunlight we can see the moon also from the earth that falls on it. On a full moon night we see the entire side of the moon that faces the earth. जब फुल मून नाइट होती है, मीन्स जब पूर्णिमा की रात होती है, तब हमें पूरा मून दिखाई देता है. दैट मून इज फेसेस द अर्थ. On a new moon night, we cannot see any of it. So, okay. From the full moon to the new moon, the illuminated part of the moon seen from the earth becomes smaller and smaller. जब full moon day night होती है, तब से लेकर न्यू मून तक धीरे धीरे मून का जो साइज़ है वो छोटा होता जाता है.
and we can see that illuminated part of the moon. हमें न्यू मून नाइट तक मून छोटा छोटा होता दिखाई देता है. फ्रॉम न्यू मून टू द फुल मून इट अगेन ग्रोज बिगर एंड बिगर. एंड वापस जब न्यू मून नाइट होती है मीन्स व्हाट, पूर्णिमा की रात से अमावस्या की रात तक मून की साइज जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है. एंड अमावस्या की रात से पूर्णिमा की रात तक वापस से मून की साइज धीरे धीरे बढ़ती जाती है. इट ग्रोज बिगर एंड बिगर. दिस डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून दैट वी सी आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून. ये जो मून के जो डिफरेंट साइजेस हमें अर्थ से दिखाई देती हैं, कभी छोटा छोटा होता जाता है, कभी बड़ा बड़ा होता जाता है. सो दिस डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून. द लूनार मंथ एंड डे, that is Tithi. The lunar month and the days, that is Tithi. You know that it takes 14 to 15 days from new moon or to full moon. अमावस्या की रात से पूर्णिमा की रात तक कितना टाइम लगता है आने के लिए? 14 से 15 दिन. This is the fourth night of the waxing moon. After the full moon, the moon appears smaller and smaller. फुल मून नाइट के बाद मून हमें धीरे धीरे छोटा छोटा होता दिखाई देता है. एंड आफ्टर 14 to 15 days इट इज़ न्यू मून अगेन. उसके बाद वापस से 14 से 15 दिन बाद वापस से न्यू मून नाइट आती है. मीन्स उस रात हमें आसमान में चंदा मामा बिल्कुल दिखाई नहीं देता. This period is the fourth night of the waning moon. Thus, the period from one new moon to the next is of 28 to 30 days, and it is called the lunar month. एक फुल मून से दूसरे फुल मून तक का डे और एक न्यू मून से दूसरे न्यू मून तक का डे, इसके बीच का जो पीरियड है इट रिक्वायर्स 28 to 30 days. And that period is known as lunar month. Every day of the lunar month is called Tithi. और lunar month का हर दिन it is known as a Tithi. In this picture you can see different phases of the moon. See, from here it starts new moon day, and then we'll start observing the small size of the moon. And then it becomes bigger and bigger and bigger, and after 14 to 15 days we can see the full moon in the sky, that is on full moon night. मीन्स जब पूर्णिमा की रात होती है तो हमें चंदा मामा ऐसा दिखता है. और उसके बाद जब पूर्णिमा के बाद वापस से जब तक अमावस्या आती है 14 से 15 दिन बाद, तो वापस से मून की साइज जो है वो धीरे धीरे हमें छोटी होती दिखाई जाती है. So here we can say it is a new moon, and here we can say it is a full moon. So see this, the new moon that requires 15 days, the full moon that is waxing moon. Means new moon से full moon तक जाने का जो सफ़र है that requires 15 days, and it is known as waxing moon. And the full moon to the new moon, it also requires same time of 15 days. It is called waning of the moon. Means साइज जो है मून का जब इंक्रीज होता जाता है अमावस्या की रात से पूर्णिमा की रात तक, धीरे धीरे मून का जो साइज इंक्रीज होता जाता है, इस प्रोसेस को वैनिंग ऑफ मून कहते हैं. वैक्सिंग ऑफ मून कहते हैं. अमावस्या की रात से पूर्णिमा की रात तक धीरे धीरे मून का साइज बढ़ता जाता है. इस प्रोसेस को वैक्सिंग ऑफ मून कहते हैं. एंड पूर्णिमा की रात से दैट इज न्यू मून से फुल मून से न्यू मून तक, पूर्णिमा की रात से अमावस्या की रात तक धीरे धीरे मून का साइज डिक्रीज होता जाता है. इट बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर. दैट प्रोसेस इज नोन एज वैनिंग ऑफ मून. द फोर्थ नाइट ऑफ वैक्सिंग मून प्लस द फोर्थ नाइट ऑफ द वैनिंग मून इज कॉल्ड lunar month.